कि हमें ना आप दारू सर्व कर देंगे क्या? Will I get arrested for this? He literally snatched the bottle away from my hand, and you guys won't believe what we did, okay? I was so cute. And then this guy stops in the middle of nowhere. He was like, "Bro, are you drunk?" And I was like, "Fuck, I am drunk." I did something which I heavily regret. Hi guys, welcome back to my channel. So yes, we are doing this. We are doing weekly story times, and I'm really sorry ये video Friday को नहीं आ पाया. I've been running very busy. You guys know I've been doing a lot of brand videos as well, and I'm also flying to Chennai tomorrow for a very exciting project जो कि हम पहली बार कर रहे हैं. But I'm not gonna bore you with that. So आज का story time शुरू करते हैं, which is going to be with Moki. So, this story time is actually the first time I ever got drunk. But dramatic effect मेरे हाथ में दारू की बोतल भी है. To everyone who is my family, please don't watch. Do you remember my first ex-boyfriend? The one who I said could have been gay? Yeah, well, me getting drunk first time was actually with him. So हुआ ये था, it was 25th December, यानी कि Christmas दिवस, यानी कि Santa Claus दिवस. So I was all in my red fit and I went to Halls Cast with him. वो I think अशोक विहार दिल्ली में रहता है, तो वहीं से आया था मेरे से मिलने. We met at the metro station and then we went to the Halls Cast village. And वहाँ पे you guys know park है, ये है, वो है, सब है. So we actually went to this really cool place which was overlooking that lake जो है HKV में. तो हमने मस्त खाना खाया. It was with a view. एकदम दिल्ली की ठंड थी. I was with my boyfriend. We were overlooking a very beautiful scenery. तो मैंने उसको बोला कि यार, you know what, I feel like drinking a bit. मुझे थोड़ा जानना है कि कैसे होता है. I was 19 at the time, and please guys, I do not promote drinking at all, okay? This is just my experience. So we went to this restaurant and you guys won't believe what we did, okay? हमने एक्चुअली वेटर को पूछा कि हमें ना आप दारू सर्व कर देंगे क्या, बट हम ना 19 है, हम अंडर एज है, बट क्या आप फिर भी हमें सर्व कर देंगे? That is the height of stupidity. I was so cute, and of course the guy just looked at us and just smiled and laughed and said, "No, okay, we cannot serve you." So I was like very disappointed. I was like, यार अब तो हम नहीं कुछ इसे ट्राई नहीं कर पाएंगे नया सा. एंड फिर हमने सिर्फ बस खाना वाना खाया एंड हम फिर बाहर आ गए. So we shopped around a bit. फिर उसने मुझे बोला कि मेरे पास ना एक आइडिया है. And look at what the idea was. He took a Sprite का bottle, he emptied it, and then हम एक ठेके पे गए. वहाँ पे हमने एक वोडका की बॉटल उठाई, and then he poured vodka into that Sprite की बॉटल. I think maybe he didn't want anyone to like see कि हमारे हाथ में वोडका की बॉटल है. So I think yeah, okay, fine, that's cool. And then we went to the park and we were sitting on the bench, and I was so excited कि यार first time मैं दारू try करूँगी, वो भी मेरे boyfriend के साथ. This is so cool, this is so fun. But I had zero knowledge about alcohol. I didn't know how to mix it. I didn't know how to handle it. So I was like, Sprite की बॉटल दे, and मैं literally ऐसे लगा के गटक गई. इतनी स्प्राइट की बोतल भरी थी and I just was gulping it and my throat was burning. He literally snatched the bottle away from my hand and he was like, पागल हो गए ये क्या, ऐसे नहीं पीते. And I was like, कैसे पीते हैं फिर? तो उसने बोला आप पानी की बोतल दे. And then he mixed water into the vodka and then he had a little sip and then बोला मुझे दे. He's like, नहीं मैं तुझे नहीं दे रहा. And I was like, क्यों भाई, मुझे पीनी है and मुझे कुछ भी चढ़ी नहीं है. I don't feel anything. I don't think I'm buzzed also at all. Come on यार, give it to me. I think मेरी capacity बहुत high है. तो he gave me the bottle. And then फिर मैंने और थोड़ी बहुत पी and it was very silent but still fun because वो nerves थे कि oh we're drinking, we're doing something wrong. Will I get arrested for this? अब मैं फट रही है वीडियो बनाने में अब. Let me check. According to ChatGPT, I am safe, so let's go. So after that, I was like, यार मुझे ना dessert खाना है, मुझे बड़ी dessert की craving हो रही है. So he said, okay, fine, let's go for some dessert. So हम हॉर्स खास से साकेत जा रहे थे. DLF Promenade Mall, I think. हाँ, जहाँ पे बिगचिल है, हम वहाँ जा रहे थे. And I told him कि यार मैं पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ, मुझे पता है कि कहाँ जाना है, कैसे है. So he was like, okay, you take us. We sat in the auto. Auto चल रही है. And then this guy stops in the middle of nowhere. And then I was like, हाँ यही है, सही जगह आ गए हम. एंड ही इज लाइक, आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ. चल उतरते. आई कैन रस्ट आउट ऑफ द ऑटो. आई एम स्टैंडिंग, आई एम लुकिंग हियर एंड हियर. मैं ऐसे डोल रही थी एंड माई एक्स बॉयफ्रेंड देन पेड द ऑटो वाला एंड ऑटो वाले भैया चले गए. देन ही सेड, मॉल कहाँ है वैष्णवी? एंड आई वाज लाइक, इधर ही तो कहीं था. देन ही रियलाइज, व्हाट, इधर ही तो कहीं था का क्या मतलब है? यही कहीं होना तो चाहिए. He was like, bro, are you drunk? And I was like, हाँ ऐसे होता है भंडी में, ऐसे होता है when you're drunk. And then I realized, oh fuck, I am drunk. And I made us stop the auto at God knows what location. And he listened to me also. Like, bro, थोड़ा दो ब्रेन सेल लगा ले यार, गूगल मैप थे तब. भाई फिर तो मतलब ऐसे हो गया था कि भाई हम कहाँ आ गए हैं. And he was like, I think मुझे पता है कैसे जाना है, मैं गूगल मैप लगा रहा हूँ. And then we started walking towards the mall. And वहाँ पे फिर पुलिस थी. पुलिस ने देखा कि एक लड़का एक लड़की को कहीं लेके जा रहा है.
एंड उस टाइम पे भाई बहुत फटती थी, ठीक है, क्योंकि हमें लगता था कि यार हमने दारू पी हुई है, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो जैसे गड़बड़ ना हो जाए. बट थैंकफुली नथिंग हैपेंड. वी जस्ट वॉक्ड बाय एंड वी वेंट टू द प्लेस. अब मैं रास्ते में ऐसे हो रही थी, ठीक है, बिकॉज आई वॉज ड्रंक एंड यू नो यू वांट टू फील द drunkenness. So yeah, and I was swerving between cars and literally a car stopped like just before it hit me. So yeah, that was not smart at all. Okay, and मेरा बंदा, भाई तू मेरे साथ है, तेरे को पता तेरी बंदी नशे में है, तू पकड़ ले उसका हाथ. But he was like no PDA. Anywho, then we went to Big Chill. Okay, Big Chill में हम अंदर गए and then we sat down and then I told him yeah let's get some water. तो waitress पानी लेके आई, मैंने पानी पिया and then he's just studying the menu and उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं and then he's like वैष्णवी you know बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है, कहीं और चले. And then I was like really, ठीक है कर लेते, कोई बात नहीं. Then he's like नहीं यार एक्सपेंसिव है. And I was like यार ठीक है चलो कोई बात नहीं, I don't have the energy to fight you. But then we got up from Big Chill सिर्फ उनका पानी पी के, we left the restaurant and then we started looking for a dessert place because मुझे तो dessert भाई खाना था. He was extremely pissed off at that point, I could see. And ठीक है, maybe you don't want to be the person who's taking care of the other person, but I am not your friend, I'm your girlfriend. You're supposed to find it cute, okay? You are not supposed to be judging me कि भाई क्या कर रही है ये. फिर उसके बाद we found a dessert spot, we went over there, we ordered a brownie. I finished most of it because I was like I was actually like that. And then he kept telling me अब तो ठीक हो गई है, अब तो ठीक हो गई है, अब तो बस नाटक कर रही है ड्रंक होने का, तो ठीक हो गई है. And I was kind of buzzed still. And वो sort of मुझे फिर अब बीटी देने लग गया था. After dessert, I was like अब क्या करें? Then he was like you know metro station चलते हैं because मुझे कहीं जाना है. I was like तुझे कहाँ जाना है? तेको क्यों जाना है? कहाँ जाना है? And then he tells me that मेरे स्कूल में क्रिसमस पार्टी हो रही है, बहुत अच्छा लाइटिंग होता है वहाँ पे, बहुत अच्छा डेकोर होता है एंड मुझे वो लाइटिंग एंड डेकोर देखने जाना है क्रिसमस पार्टी का. Okay, let's back up a bit, okay? This is Haus Khas, this is Huda City Center, and this is Ashok Vihar, okay? इतना distance है, इतना दूर नहीं है Huda City Center, now Millennium City Center. So I told him कि listen यार, I understand, but can you at least please drop me because I think I'm drunk. तो which he said कि यार वैष्णवी मैं तुझे drop करूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा, मुझे बहुत time लग जाएगा. तू ठीक है ना, अभी तो ठीक हो गई है, तू हो गई है अब ठीक, यू आर नॉट ड्रंक एनी मोर. एंड देन आई सेड नहीं प्लीज कम ड्रॉप मी ऑफ, प्लीज डोंट गो, हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ. एंड देन ही वाज लाइक चली जाएगी ना तू. आई मीन ठीक है, इफ आई डोंट हैव एन ऑप्शन येस आई गेस. देखो मतलब इतना क्रिसमस डेकोरेशन देखने का मन है तो जा भाई, तू क्रिसमस डेकोरेशन देख ले. एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ही वाज गे. क्रिसमस डेकोरेशन देखने के लिए अपनी बंदी को छोड़ रहा है भाई. कंट्रोल होता है. At that point, like, and I remember I did something which I heavily regret. Okay, so I hugged him at the metro station, and then I kind of like, leaned into kiss. And he just like pushed me away and he said, PD nahi karte and everything. And then I was like, yeah, of course. I mean, why am I even doing this? And then I realized that I was actually doing this because I actually drunk थी. I was not in my complete senses. But he ignored this fact. He ignored me telling him to please drop me off at home. And वो अपनी मेट्रो में बैठ के चला गया. And by the way, उसकी मेट्रो पहले आई थी. Chivalry गई. And then I sat in the metro station and I was alone, I was tipsy and I was feeling a little scared. So I texted my sister ki Dee, I think I am drunk. My sister is like, okay, but ये तेरे साथ है ना तेरा बंदा? Then I told Dee कि नहीं, he's going to his school to see the Christmas decorations. My sister freaked out. She was like, what? He left you alone? You're drunk? तू मेट्रो से आ रही है घर पे 25 दिसंबर को विंटर्स में रात के 9 बजे. And my sister just completely lost it, okay? And my sister was actually with her then boyfriend. And she said कि तू जैसे ही मेट्रो पे आएगी, we are coming to pick you up. But I'm telling her, नहीं मैं ठीक हूँ, I'm okay, I'm not drunk, I'm fine. See, I'm drunk. And then she was like, तेरी आवाज़ से पता चल रहा है कि you're drunk, okay? So we are coming to pick you up. And आजू बाजू के मेट्रो के लोग मुझे घूरना स्टार्ट कर चुके थे. तब मैं इन्फ्लुएंसर नहीं थी, so thank God. Then I reached Huda and I came out of the metro station and thankfully my sister was there. I sat in the car and they were like, pani pi, ye pi, wo pi, and then they dropped me off home. So I reached home safely. जब मैं घर आई तब I just started screaming कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, वो मैं मम्मी.
एंड देन माई मॉम एंड सिस्टर गेम दर लाइक क्या हो गया इसको, पेट दर्द पे ऐसे तो कभी रिएक्ट नहीं करती है. एंड देन माई सिस्टर न्यू ऑफ कोर्स कि यार ये थोड़ा सा नशे में है, सो शी वाज लाइक मैं इसको नींबू पानी पिलाती हूँ, मैं इसको ठीक करती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह. माई मॉम स्टिल डजंट नो that day I was drunk, but now she might know if she watches this video. But yeah, my sister took care of me and I got okay. I didn't vomit or anything. I didn't have any hangover. I was perfectly fine. And that was the story of me being drunk for the first time in my life. Uske baad se I understood alcohol a little bit more. You always dilute it. You always eat something with it. You have to be safe with it. You don't mix stuff. Blah 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 blah. Anyways, I would never recommend getting drunk below the legal age because ऐसी चीजें होती हैं. क्योंकि बच्चे होते हो तुम लोग, तो तुम्हारा बंदा तुमको मेट्रो स्टेशन पे अकेले छोड़ के घर जा सकता है क्रिसमस के डेकोर देखने के लिए, ठीक है. सो इस एज में मत करना. बड़े हो जाओ, सेफली करो, अच्छे से करो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. So yeah guys, that was it for today's video. I hope you enjoyed the story time. I know you guys are waiting for the dating disaster -1, but I just don't feel ready to talk about it. I don't know. I can't get myself to unpack the trauma. But someday I will. So please subscribe, like, share this video, and I'll see you in the next one. Bye.